time evolution of a wave function of a free particle. So if we can recall that we first determine the potential energy. From that potential energy, we write the Hamiltonian. Then we solve the eigenvalue equation H psi equal to E psi. The solution of this equation gives us the basis states which can be used to expand any state of the system and so on. These same steps will be obeyed in the time evolution of a harmonic oscillator also. Time evolution of harmonic oscillator. So let us start with this. The initial sections are very easy and similar, so we can go through them a bit quickly. uh, Schrodinger time dependent equation enables to determine the time evolution of wave function of a harmonic oscillator. Schrodinger time independent equation is given by H psi equal to E psi. To solve equation 1, we at first decide the functional form of potential energy. The first thing is to write the potential energy. So for a harmonic oscillator, the potential energy is half kx square, and k can be written as m into omega square. The Hamiltonian thus becomes minus h cut square by 2m d2 by dx square plus half kx square. So this is the Hamiltonian. Uh, then then we solve the Schrodinger time independent equation, that is the eigenvalue equation, to obtain the eigenvalues and the eigenfunctions. And these eigenfunctions will be taken as the basis states generally, which we use to write as summation of phi I, the set of phi I. These eigenfunctions, here I have written this eigenfunction as set of psi n instead of pi I, it is written as set of psi n. These eigenfunctions serve as the orthonormal basis states to expand any state of the system. So this is the very common part. Next is, if this is any state of the harmonic oscillator, then we know that we can expand this state as a linear combination of the basis states. So this phi psi n is the set of basis states, and these are the coefficients of expansion. So the wave function at any time t can be written like this, where the basis states are usually time independent, because you can easily correlate with the fact that the basis vectors are basically these unit vectors ijk in case of this Euclidean space. So here this psi and x are similar to this. So they are time independent. They are just the basis vectors which can be used to expand any random state of the system. We also know that the coefficient at time t. We also know that the coefficient at time t can be written in terms of the coefficient at t equals to 0 by using this factor. So an at time t can be written as an0 e to the power minus I by h cut en times t, where en is the energy of the nth state. Now for a harmonic oscillator, the energy eigenvalues are n plus half h cut omega. So we can substitute the value of En as n plus half h cut omega. Yes, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So up to equation 2. 2 is important equation. We have to return back to this equation once again. Before this, we don't have any significant equation where we have to return back. So keep an eye on this equation 2. What we have written in equation 2?
is, it is the wave function at a time t has been written in terms of the wave, in terms of the coefficient at t equals to 0. Now, what is said next is, suppose we know the value of psi x0, that is the wave function at t equals to 0. Uh, and if we represent that by psi x0, then we can obtain this an0 from this. This also we discussed, but doesn't matter. So we have a discussion on this right now also. तो क्या बोला जा रहा है कि अगर हमको t0 का वेव फंक्शन मालूम है और अगर उस t0 का वेव फंक्शन को हम साई x0 लिख रहे हैं, तो इसके हेल्प से हम लोग इस a0 को कैलकुलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. ये कुछ वैसा ही बात था कि वेक्टर a को अगर लिखा गया है i ax प्लस j ay प्लस k az, तो उसमें बोला गया था कि कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं इसका और इसका इनर प्रोडक्ट लेकर. याद आ रहा है? यस सर. सो यहां पर इसको हम लोग परफॉर्म करके देख रहे हैं. तो दिस इज आवर इक्वेशन 2. एंड नाउ what we are doing is we are writing the wave function at t equals to 0. But how are we writing the wave function at t equals to 0? We are obtaining the wave function at 2 equals to 0 from this equation 2 only by letting t equals to 0. By putting t equals to 0, I get psi x0. That means the wave function at time t equals to 0. So if you put t equals to 0, this entire term becomes 0. So this entire term becomes 1. And thus, you must be left with something like summation. Then you have this an term and then this basis get. I hope it should be like this only. So this is the wave function at t equals to 0. This is the coefficient an, and then you have psi n. Keep in mind that we are trying to calculate an0. an0 को कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं इसके लिए? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय psi m conjugate and integrating over the entire space. So this is your psi x0, basically psi 0. Then you have dx multiplied with psi m conjugate. And this has been done on both side. अब यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिक्स पे ध्यान देंगे. ठीक है, कैलकुलेशन कैसे हो रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे. इसका फिजिक्स वाला पार्ट अभी आने वाला है. सो बी वेरी प्रिसाइज, नहीं तो इन सब क्वेश्चन आंसर सब आने से बीच के स्टेप में नहीं फंसना है. सो we have multiplied with psi m conjugate and then we are integrating it over the entire space. So this an has been taken out and it is psi m conjugate psi n dx integrated from minus infinity to plus infinity. Do check, will this reduce into this delta function? Yes sir. So this will reduce into this delta function. Which delta function is this? Dirac delta, Kronecker delta. Kronecker delta. So this is the Kronecker delta function, which is written as delta mn, which is written as delta mn. Yes. Now, this is delta mn. Left hand side, we are carrying it as it is. Now, think of this statement that how will you get this from the
above equation. थोड़ा सा मैथमेटिकली सोच लीजिए. Yes, what we can do is, let us expand this. Running index is over N. n. So let me put n as 0. And what this 0 represents? At t equals to 0. Correct. And then this should be like delta m 0. Due to summation, you put this plus sign and take the value of n as 1. So a1 0 delta m1 plus so on. What will be the value of this term? So Sir, 0, This one. 0. 0. Which term will survive? Only when n is equal to m. Yes, sir. So when n is equals to m, this term becomes 1. 1, 1. and you are left with n equals to m. So you are left with either am0 or you write an0. Doesn't matters, because they are equal, because this is the term when m is equal to n. Yes, sir. So now let me release all these things, and then you see इससे ये कैसे आया, समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. Summation हट गया. We have performed the summation already. So this is, and left side is as it is. So you have this coefficient. You have this coefficient like this, an. Now see, an यहाँ पर m लिखा हुआ था, इसको भी हमने n कर दिया, क्योंकि अनवांटेड रनिंग इंडेक्स का हमको जरूरत नहीं है. ये वही टर्म है जब m is equals to n. So whether I put the suffix m or I put the suffix n, it doesn't matters. So we have taken it as n. Now if we have obtained an, written back to equation 2 here, this is our important equation. Now if I have obtained an0, by putting an0, I can obtain the value of psi xt. Yes, sir. ये पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू पुट नहीं किया गया है. यू विल डू बाय योरसेल्फ, खाली पुट करके छोड़ देना है, नथिंग टू बी सॉल्व. पुटिंग an0 in equation 2, we can obtain the value of psi xt. यहाँ पर स्पेस है, हम आंसर देंगे तो वहां पर इंसर्ट कर लीजिएगा. जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट. नाउ टू कैरी ऑन विद दिस आंसर, इसी का थोड़ा एनालिसिस अभी और है, तो उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं. This is now again the important part which involves some physics. What is that? Now from equation 3, 3 is what? 3 is nothing but the value of the wave function at t equals to 0. 3 is nothing but the value of the wave function at t equals to 0, but again obtained from the same equation 2 by letting t equals to 0. So this is psi 0 in terms of the coefficient an0 and psi nx. Now, if I take the conjugate of this equation, it is psi conjugate x0, and this is the conjugate of psi nx and conjugate of anx. The only thing is that instead of writing the running index n, I have
taken here the running index as m. Can this be done, or is there any issue with it? Just give me 1 minute. Yes, can we write the suffix as m? Yes or no? Are we connected? Yes, sir. Yes, sir. It doesn't matter what suffix you take. See, if you run the index, isn't it that it is a1 0 psi 1 plus a2 0 psi 2 and so on? And if you have taken the conjugate with the running index m, what will happen? If you expand this, it is a1 conjugate 0 psi 1 conjugate plus a2 conjugate 0 psi 2 conjugate and so on. तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है. एक्सपैंड करिएगा तो एक ही चीज आएगा जो आना चाहिए, वेदर यू राइट एम और वेदर यू राइट एन. करेक्ट. Yes, sir. फिर भी एम ले क्यों रहे हैं? अगर दोनों से एक ही आता है तो एम क्यों ले रहे हैं? जस्ट टू डिस्टिंग्विश, हम कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन वाला कंजुगेट के साथ एसोसिएटेड रनिंग इंडेक्स है और कौन जो है वो रियल पार्ट के साथ एसोसिएटेड रनिंग इंडेक्स है, सो एज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. Otherwise, there is no issue of whatever index you write. Next is multiplying the above two equations and again integrating over the entire space. These two equations are multiplied and then integrated over the entire space. So left hand side is very simple. Psi x0 conjugate psi x0 dx over the entire space. You have these two summations. One running index is n, one running index is m. These coefficients can be taken out of the integration, and this is the thing. Again, this will result into Kronecker delta function. Yes. Yes, sir. And what about this term? Is it the left hand side is mod psi square dx integrated over the entire space? Yes, sir. Yes, sir. Should be equal to 1. 1. 1. 1. So this left hand side becomes 1 and the right hand side you can see this is summation over n summation over m am conjugate at 0 time an conjugate at t equals to 0 delta mn. Correct? Yes, sir. Now here again थोड़ा सा यहाँ फिर सोच लेना है. The summation has been performed but only one summation. This we are retaining. इसको as it is रखे हैं. That means we are just running m. कोई बात नहीं. तो इतना को सोचिए with m being expanded. M starting from suppose 0, 1, 2 and so on. So how will the terms look like? The first term will be like a0 conjugate at t equal to 0, an 0 delta 0 n first term plus taking m equal to 1 a1 conjugate an delta 1n. All these terms will become 0. and again only that term will survive when m is equal to N. n. So am I writing an conjugate then an
into 1. Yes, sir. Yes, sir. An conjugate into An is mod An square. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So mod An square and the running index n is still left with. Now, here starts the interpretation. What is that? Here An0 mod square represents the probability of finding the oscillator in the nth state. This is important statement. It involves physics. इसी बात को समझना है. So this term represents the probability. Why probability? Very easy. यहाँ देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी था क्या? Yes, sir. तो राइट हैंड साइड भी प्रोबेबिलिटी होगा. Yes, sir. अगर ये प्रोबेबिलिटी है और ये कुछ टर्म्स का समेशन है तो ईच टर्म विल रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी. Yes, sir. Yes, sir. Then only the principle of homogeneity will hold. So each term will represent probability. So the expansion is like A1 0 or A0, you write whatever you starting in from 0. So this is A nod. अच्छा ये याद है कि नॉड क्यों लिख रहे हैं? 1 से काहे नहीं शुरू कर रहे हैं? Because if you recall the energy value n plus half h cut omega, here n starts from 0. 0. So there is a state which we termed yesterday as 0 point energy, and that 0 point energy refers to the value n equals to 0. That is why we have a term here starting with n equals to 0. So you have A0 0 mod square plus A1 0 mod square and so on. Can anyone tell me what this term represents? This entire term? Sir, probability of finding the oscillator in the first excited state? Yes, very correct. It represents the probability of finding the particle in the first excited state, or I can say it represents the probability of finding the particle in the state having energy 3 by 2 h cut omega. True? Yes, sir. Yes, sir. Fine. One more thing. Here An0 mod square represents the probability of finding the oscillator in the nth state, and this probability does not change with time. Again, a very important statement. And this probability does not change with time. ये probability time के साथ change नहीं करता है. So if it does not change with time, then there is no requirement of putting the suffix related to time. अगर ये कोफिशिएंट टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है तो टाइम के लिए जो सफिक्स लगाए हैं उसको लिखने का जरूरत नहीं है. तो an0 को हम डायरेक्टली an ही लिख सकते हैं. यस, रिप्लाई करो यहां तक. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, प्योरली एग्जाम्पल. छोटा कम नंबर ऑफ स्टेट्स को लेकर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है. Let us illustrate the above condition with the following example. When we write psi x0, an0 लिख रहे थे लेकिन अब और नहीं लिख रहे हैं क्योंकि an टाइम से इंडिपेंडेंट है. psi n x, it implies that any state is actually a superposition of various states. Any state of the harmonic oscillator is basically a superposition of various states. ये स्टेटमेंट अब धीरे धीरे समझने लगे हैं ना कि कोई एक स्टेट कुछ और अदर स्टेट्स के सुपरपोजिशन से क्रिएट होता है.
Yes, sir. So let us suppose that psi x0 is a superposition of two states and they are written like this. समझाने के लिए समेशन में सिर्फ दो ही टर्म लिया गया कि मान लीजिए ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का कोई स्टेट है जो इस दोनों स्टेट्स के सुपरपोजिशन से बना है। इस दोनों माने ये हो गया उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया उसका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इस दोनों के सुपरपोजिशन से हार्मोनिक ऑसिलेटर का कोई अदर स्टेट बना है। इज इट ओके? Yes, sir. So thus the probability of finding the oscillator in n equal to 1 state, n equal to 1 state में मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो इसका जो कोफिशिएंट है वही ना हमारा a1 है, और प्रोबेबिलिटी क्या था बोले थे? मॉड a1 का स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. तो इस स्टेट n1 n इक्वल टू 1 में मिलने का प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/2। Yes, sir. Energy Yes, of the sir. oscillator if n equals to 1 is 3/2 h cut omega. Correct? Yes, sir. Sir. हाँ बोलो, कुछ डाउट है? नो। No, n sir. इक्वल टू 2 में मिलने का प्रोबेबिलिटी भी कितना होगा? तो 1/√2 का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर। और इस स्टेट का yes. एनर्जी कितना है? तो 5/2 h कट ओमेगा। ठीक है? Which means that the probability that the oscillator has energy E1 equals to 3/2 h cut omega is half, and energy 5/2 h cut omega is also half. करेक्ट? इस पर ना क्वेश्चन आता है बहुत सारा, कुछ नहीं, सिंपल सा ही प्रोबेबिलिटी खोजने के लिए सुपरपोजिशन से स्टेट क्रिएट कर देगा और फिर बोलेगा कि इस एनर्जी स्टेट में मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, इस एनर्जी स्टेट में मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, बताइए। सिंपल सा चीज है, खाली रिकॉल हो जाना चाहिए कि ये पढ़े थे ऐसा। ठीक है? अब एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है, देखिए इसी से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है? देखो बहुत एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। नाउ if the coefficient does not change with time, a1 a2 anything, a2 जीरो लिखना ही बंद कर दिए क्योंकि a2 t इक्वल टू 0 पर जितना होगा a2 t इक्वल टू t पर भी उतना ही होगा। सो कोफिशिएंट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। कोफिशिएंट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। Go back to the equation somewhere. The coefficient does not depend on time. Does the basis state depend on time? No, sir. No, sir. So if the coefficient does not depend on time, the basis state does not depend on time, then why does a wave function changes with time? ना कोफिशिएंट बदल रहा है, ना बेसिस स्केट बदल रहा है, तो फिर हम क्या टाइम इवोल्यूशन बोल रहे हैं? क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. अब आंसर बोलिए। ये तो कंफर्म है, वो भी बात ठीक ही पढ़ लिए हैं कि जैसे ही वेव फंक्शन प्रोपागेट करता है या टाइम बीतता है तो वेव पैकेट चेंज होने लगता है, वेव फंक्शन चेंज होने लगता है। अब बोल रहा है कि भाई जिस कोफिशिएंट्स और जिस बेसिस स्केट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से वेव फंक्शन बना है वो दोनों में से कोई भी नहीं चेंज कर रहा है, then why does the wave function itself changes? I hope you are ready with the question so that we can take up the answer.
Now the answer is, this is the wave function at t equals to t, an. Fine, it does not depends on time. But isn't it that we have this factor e to the power minus I by h cut e into t? We have this factor? Yes, sir. Yes. So we have this factor. Here this h cut has been cancelled. So ये term लिखा गया. Now the very interesting thing is that ये जो आप बेसिस केट देख रहे हैं, इस बेसिस केट के साथ जो भी मल्टीप्लाइड टर्म है, ये हमारा कोफिशिएंट है. ये अकेला कोफिशिएंट है क्या? नहीं सर. No, sir. नहीं, No, sir. ये भी कोफिशिएंट है. अगर ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, तो हम लोग अभी क्या बोले थे? अच्छा, यहीं पर चेक कर लो, फिर देखते हैं. इट इज ड्यू टू द फेज फैक्टर. इसमें तो फेज का फैक्टर है. द वेव फंक्शन चेंज विथ टाइम. ये फैक्टर के कारण ये वेव फंक्शन टाइम के साथ चेंज कर जाता है. बट द मॉड स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट के मॉड का स्क्वायर जब करोगे तो an कंजुगेट इंटू an और फिर e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू e टू द पावर प्लस आई थीटा. मॉड का स्क्वायर बोल रहा है. ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 1. 1. तो ये फेज का फैक्टर मॉड स्क्वायर में हट गया, जो कोफिशिएंट an को इंडिपेंडेंट बना दिया. किससे? Times. टाइम से. इसे अगर वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया तो प्रोबेबिलिटी टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया. Yes, sir. एक बार फिर से पढ़ो. इट इज ड्यू टू द फेज फैक्टर दिस वन, द वेव फंक्शन चेंज विथ टाइम, बट द mod square of coefficient of psi n, that is this one, does not change with time. That is different states superposed with different phase at different time. Different states superposed with different phase and different time, and thus the pattern of the wave packet changes. ये वही वाला स्टोरी है जो आपको बताए थे हम एक बार, एक दिन जिस दिन स्प्रेड पढ़ रहे थे, कि बहुत सारे वेव फंक्शन के सुपरपोजिशन से कोई एक वेव पैकेट बना है. नाउ ईच ऑफ द wave travels with a different speed, so after some time the recombination is different from the recombination which earlier was present there. So the wave packet changes with time, but the probability doesn't changes with time, neither the basis state changes with time. Agree? Yes, sir. इस पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन बनाइएगा तो और थोड़ा क्लैरिटी आएगा. हमने क्वेश्चन तो नहीं निकाला है, हम लोग क्वेश्चन निकाल के रखते तो कुछ हम बना नहीं सकते. इसमें बहुत सीधा सा क्वेश्चन आता है. जस्ट यू हैव टू इमेजिन कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, so you can easily solve that. Okay, fine. एक बार हमको जरा सा खाली टाइम रिकॉल कराओ तो तुम लोगों का कब एग्जाम का डेट दिया गया है? 21 जुलाई. 21 जुलाई. और लास्ट क्लास काउंटिंग क्या लिखा गया है? जून. यस सर. 2 जुलाई शायद, एग्जैक्ट याद नहीं है सर. ठीक है. 5th July, sir. 5th July. 5th July. Okay. So we have this. What other things we are left with is, और क्या हमारे पास बचा हुआ है? एक हम लोगों का अभी भी बहुत सिंपल सा आंसर है, एंड दैट इज योर, कौन सा एप्लीकेशन अभी बाकी है पढ़ना? कोई सिलेबस देखे हो?
Anyone who has gone through the syllabus? What application is still left? Okay, the application that is still left is your finite potential well. Have we studied potential well earlier? Yes? Yes, sir. Potential well that we studied earlier. It was infinite potential well. What was the other name for this? Particle in a box. Particle in a box. So where the particle was trapped in a well, where the potential energy was zero and the potential energy outside was infinite. Potential energy outside was infinite. Inside was zero, outside was infinite. And because of that infinite potential outside, there was no chance that the particle can move out of this potential region. So one more we have to study is where the particle is trapped in a box, surely, but potential inside is zero, but the potential outside is not infinite. Rather, it has some value, say V naught. And if the total energy of the particle is E, then you can easily predict that now because the potential energy outside is not infinite, the particle may penetrate into this region. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So this is one of the application which we are due with. यहाँ क्या बोलते हैं ना, यहाँ पार्टिकल बाउंड है, बाहर निकल ही नहीं सकता है. So whatever states you discussed here, they were bound states. लेकिन यहाँ पार्टिकल परफेक्टली बाउंड नहीं है. So these are unbound states. And don't you think that this is more of a common thing? That means we will be encountering the second situation more frequently in problems of physics. Yes. Yes, sir. So this is one application. Another application is your hydrogen atom. A long topic. Hydrogen atom. So these are the two applications. And the rest thing that you have to study are from that atomic physics part. So what I am preferring is that I will cover this finite potential well next. And for the time being, we will leave this hydrogen atom part because it's a long answer. It takes time to wrap it up. So what we will do is after this finite potential well, हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक वाला सेक्शन पढ़ लेंगे. एटॉमिक वाला सेक्शन पढ़ लेंगे. इंटरेस्टिंग थियरीज हैं दोज एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला बात आपको बता रहे थे, स्पेस क्वांटाइजेशन, उसी का थोड़ा और डिटेलिंग है, वो पढ़ना है. जिमान इफेक्ट पढ़ना है. तो इन सब को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे और लास्ट में हाइड्रोजन एटम करेंगे. हाइड्रोजन एटम हम लोगों का एलिमेंट्री क्लास में जो स्कूल में हम लोग को एसे लिखने दिया जाता था ना, वैसा टाइप का हिसाब है. कि सबसे लास्ट में ऐसे लिखते थे कि जब तक बेल ना लगे तब तक ऐसे लिखते रहेंगे. तो सेम हियर, हाइड्रोजन एटम हम लोग शुरू करेंगे तो खत्म ही नहीं खोजेगा. हम चाह रहे हैं कि उसको लास्ट में करें कि अगर थोड़ा बहुत कम भी टाइम परमिट हो तो भी हम लोग बाकी सारा चीज के साथ ओवर हो जाना चाह रहे हैं. ठीक है. एंड वन मोर रीजन इज दैट
एज आई वाज गोइंग थ्रू द सिलेबस, ये हाइड्रोजन एटम बेसिकली बाद में भी एक बार फिर से किसी सेमेस्टर में है. एक्चुअली द फैक्ट इज दैट, हम आपको एक बार बताएं एक डिटेलिंग. बिफोर दिस ऑल्सो ड्यूरिंग द सीबीसीएस सिलेबस जो था, उसमें भी क्या था ना, सीबीसीएस में जब यूजीसी के तरफ से सिलेबस आया था, हेडिंग लिखा हुआ था थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. आप अभी भी पुराना सिलेबस देखिएगा, उसमें अंदर हाइड्रोजन एटम था नहीं, खाली हेडिंग हाइड्रोजन एटम था. तो बाद में जब हम लोग सीबीसीएस का सिलेबस फ्रेम किए थे, तो हम अपने से ही वहां पर हेडिंग के साथ कोरिलेट करने के लिए हाइड्रोजन एटम का डिटेलिंग को इंसर्ट किए थे. तो वो चीज है. और बाद में फिर कहीं पर एक बार हाइड्रोजन एटम पढ़ना है, बट स्टिल एक बार हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं बोल रहे. इट्स a long theory, it's a little bit of difficult to understand टॉपिक. उसमें बहुत सारा चीज हम लोगों को हो सकता है कि लाइव क्लासेस में करेंगे तो ही समझ में आएगा. तो दैट वी विल डू ग्रेजुअली, बट ये एटॉमिक वाला पार्ट पढ़ लेंगे. एटॉमिक आपको कोरिलेट कराएगा लेजर, क्वांटम, स्टैटिस्टिकल सब के साथ. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे कि कल एक बार पहले हम लोग वो अनबाउंड स्टेट वाला फाइनाइट पोटेंशियल वेल को पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर एटॉमिक फिजिक्स के तरफ शिफ्ट होंगे. इज इट ओके? यस सर. बाकी पेपर का क्या अभी सिचुएशन है तुम लोगों का? क्लासेस चल रही है सर. क्लास तो चल रहा है, वो हम जानते हैं. स्टेटस पूछ रहे हैं कितना पढ़ाई हो गया एटॉमिक, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स. सर अभी चलो. रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है सर. रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है, एंड वन इज योर सॉलिड स्टेट ना. यस सर, उसमें अभी बैंड थ्योरी मनोहर सर करवा रहे हैं, और मितेश सर लास्ट क्लास में लैंग्वेज थ्योरी कंप्लीट किए थे, बोले थे कि ये सुपर कंडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. ओके, ठीक है. तो हमारा ये जो नेक्स्ट वाला आंसर है ना, फाइनाइट पोटेंशियल वेल, वो मोर और लेस सिमिलर स्टेप्स पर ही है जो हम लोग पहले का पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल बैरियर पढ़े थे. बहुत एकदम नया चीज होगा ऐसा नहीं है. द ओनली न्यू थिंग दैट वी विल गेट इज द नेचर ऑफ द वेव फंक्शन विल बी न्यू. इस बार जो वेव फंक्शन हम लोग को मिलेगा यहाँ, ऐसा वाला वेव फंक्शन हम लोग को इससे पहले नहीं मिला है कहीं, बट द मेथड इज सेम. तो वो करके फिर एक बार मैग्नेटिक मोमेंट इस सबको रिकॉल करा लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग एटसेट्रा. फाइन. यस सर. ठीक है. ओके, मीटिंग एंड कर रहे हैं. थैंक यू सर. यस, वेलकम. थैंक यू सर.